Good morning students, here I am your Shaista teacher. I welcome you all in our today's mathematics learning session. Students, previous class we have finished chapter number 2 parallel lines and transversal. Today I am going to start new chapter that is indices and cube root. So are you all ready to learn indices and cube root? Yes? Okay, let's start indices and cube root. Students, in previous standard, you have already learned indices and laws of indices. This year, chapter number 3 is based on indices and cube root. Okay, so indices and cube root. First, we will recall the definition of indices. So here, indices is the plural form. Okay, and its singular form is index number. So the index of a number says that how many times to use the number. The index of a number says that how many times to use the number in a multiplication form. So then that number are known as the indices. The index of a number says how many times to use the number in a multiplication form. So that type of a number is known as an indices number. So here one example I want to present here. So here concentrate this on the screen. So here 8 squared. Now here 8 squared. That means here 8 is the base and 2 is the power. 2 is the power, or we can say that this 2 is exponent, or we can say that this 2 is the index number. This 2 is known as a index number. Okay. So here this is known as a index number. 2 is index number. We can say that it is square. Okay, and now here 8 is the cube. 8 is the base. Here 8 is the base and 2 is the index. Okay, so how we will write this 8 square? So we will write like this: 8 into 8. It will repeat twice. Okay, why? Because the index is squared. So we will repeat as twice. What if it is here it cube 3 is given? So we will say that 8 cube. So it will repeat thrice. It will repeat thrice. So 8 into 8 into 8. Is that clear? So now here 8 into 8 is the 8 into 8 is 64, and 64 is the root of 8. 64 is the root of 8. Is that clear? Now students, here let's learn the meaning of numbers when the index is the rational number of the form 1 upon 4. When I say rational number as you have already learned chapter number 1. The meaning of rational number is P upon Q is not equal to 0 is known as a rational number. When P upon Q is not equal to 0 is known as a rational number. Now here you can see that 1 upon 4. This 1 upon 4 is not equal to 0. That means it is a rational number. Now here the question is meaning of the number when the index is the rational number of the form. Now this meaning we have to learn. Okay. Now here this is there in your textbook page number where this chapter starts. So here let us see the meaning of indices in the form of rational numbers such as 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 5. Dot dot dot. This 3 dot means ellipsis 1 upon n. So n is means what? N is natural number, and all these number 1 upon 2, 1 upon 3 and 1 upon 5, all these number are rational number. Is that clear? Now here to show the square of a number, the index is written as 2. To show the square of the number. Square of the number का मतलब होता है हम वहाँ पर इंडेक्स में कौन सा नंबर लिखेंगे? 2 लिखेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 1 upon 4 है, तो इसका अगर इंडेक्स हमको बताना है तो ऊपर के साइड, ठीक है, अपर साइड I will put here 2. So 2 represents square. So here it is written that 2 shows the square of a number. The index is written as 2. And to show the square root of the number, the index is written as 1 upon 2. Okay, 1 upon 2. Index of the number is written as 1 upon 2. For example, square root of 25 is written as root 25. That means here square is given using the radical sign. Using the radical sign. This sign is known as a radical sign. ठीक है, ये साइन को हम क्या कहते हैं? रेडिकल साइन कहते हैं. स्क्वायर रूट के अंदर ये जो रूट की साइन है इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं.
using index it is expressed as 25 1 upon 2. ओके 1 upon 2 हम लोग यहाँ पर इंडेक्स फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो ये जो है स्क्वायर है, नीचे का जो नंबर है वो पावर है और वो ऊपर जो है उसको हमने कैसे लिए, इंडेक्स नंबर में लिए। देयरफॉर रूट 25 इज इक्वल टू 25 1 अपॉन 2। तो ये 1 अपॉन 2 नीचे की साइड नहीं है, 1 अपॉन 2 अपर साइड दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पर ये 2 रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर को और यहाँ पर ये 1 जो दिया हुआ है वो इंडेक्स नंबर दिए हुए, ठीक है। इन जनरल स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हम जनरली कैसे लिखते हैं स्क्वायर, ए स्क्वायर, देखो इस फॉर्म में हम लिखते हैं स्क्वायर। इज दैट क्लियर, ए स्क्वायर 25 स्क्वायर 45 स्क्वायर, तो ऐसा लिखते हैं हम, ठीक है। एंड स्क्वायर रूट ऑफ इज रिटर्न एज स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए, इट कैन बी रिटर्न लाइक दिस ऑल्सो। और रूट ए का मतलब ही ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए, और वी कैन से ए 1 अपॉन 2, सो it is called as a square, okay, it is called as a square. Similarly cube of a is written as a cube. Similarly cube of a is written as a cube, that means cube root of a is written as cube root of a or a 1 upon cube, okay, so 1 upon cube represent 3, okay, so cube root of a. In general, nth root of a is expressed as a 1 upon n. In general, nth root, nth means natural number, and these all number are natural number. The number which start from 1 are known as natural number. So here in general, nth root of a is expressed as a 1 upon n. Now this 1 upon n is on upper side, so here n is the root. Is that clear? For example, here some example are given. 128 1 upon 7, so we can say that 7th root, okay, we will read this like this, 7th root of 128. Here 900 1 upon 2, so how we will read this, 12th root of 900, okay. Now here if 1 upon 10 1 upon 5, so here we will say x, okay, here we will say x, 10 1 upon 5 is equal to x, so x is equal to x5 is equal to 10, then x5 is equal to 10. If 10, this is the value for this 10 1 upon 5, okay, so here 5th root of 10 is x, so we can say that x is the power of 5 is equal to 10, so x 5 is written here, okay, so here 10. Is that clear? So students, in this way we learn the meaning of number when the index is rational number of the form 1 upon 4. Okay, now these all the number जहाँ पर upon में number रहेंगे 1 upon 2 1 upon 3 1 upon 5 और ये number equal to 0 नहीं है, that means these all number are rational number। और इन number के जो आप upper side में देखोगे रेडियन साइन से रिप्रेजेंट होने वाले नंबर या अपर साइड में से नंबर्स लिखे हुए रहेंगे आपको दिखेंगे, तो वो नंबर क्या है, वो नंबर्स है ये रैशनल नंबर फॉर्म में लिखे हुए 1 अपॉन 2, ओके 1 अपॉन 2 रैशनल नंबर फॉर्म में। Is that clear? Now यहाँ पर जो 2 है वो रूट है, स्क्वायर रूट है, ओके, सो स्क्वायर 25 स्क्वायर, okay, we can call this 25 square, we can read this 25 square. Is that clear? Now this 1 upon 2 is a rational number, we can write 1 upon 3, so 1 upon 3 means cube root, 1 upon 2 means square root. Is that clear? Now students, in this way we learn meaning of the number when the index is rational number of the form 1 upon 4. Now let's move on to the next slide. Now students, on the base of previous example, nth root of a is expressed as a 1 upon n. We will solve this practice set 3.1. Okay, so here we will apply that rule where nth root of a is expressed as a 1 upon n. Okay, and now here 1 upon n is a rational number. Now here concentrate question number 1. Express the following number in index form. Now here six sub questions are given. Question number 1 carries 6 sub questions. We will solve one by one. Here we have to express the number in an index form. Okay, so let's solve first one. Here 5th root of 13. So here 5th root of 13. How we will write this 5th root of 13? So first we will write 13 and above this 13 in the position of index we will write there 1 upon 5. Is that clear? So here question number
sub question 1 solution. It is known that nth root of a is expressed as a 1 upon 4. Okay, nth root of a is expressed as a 1 upon 4, as I told before. Now here, first sub question, fifth root of 13. So here, fifth root of 13 is how much? So fifth root of 13 is, how we will write this fifth root of 13? So first here on the base we will write 13, and above this base we will put there 1 upon 5. Is that clear? 1 upon 5. Why? Because that 1 upon 5 is a rational number which is not equal to 0. Is that clear? And we have to express that 1 upon 5 as this a 1 upon 4 form. Okay. Now here this 13 is a. 13 is a and 13 is base. We will keep this 13 on down. Okay. And above we will put 1 upon 5 because here it is written that fifth root of 13. So here we will write 1 upon 5. Okay. Above we will write here 1 upon 5 and here base we will put here 13. So 13 is the base and 1 upon 5 is the index. And here this 5 is the root. Okay. This denominator is the root and 1 is the power. The numerator is the power and the denominator is the root. Okay. Now this is index. This. Okay. So here 13 1 upon 5 is written. Is that clear? Now on the base of this sub question 1, we will solve here sub question 2. Sub question 2 says that sixth root of 9. Same like sub question 1. Here we will write sixth root of 9. So here which is base? Which number is base? 9 or 6? You are correct. 9 is base. So here on down we will put here 9 and above we will put here 1 upon 6. So here sixth root of 9 is equal to 9 and above we will put 1 upon 6. Is that clear? 9 and above we will put here 1 upon 6. So 9 is the base and 1 upon 6 is the index. So here 6 root. 6 is the root. Is that clear? So 9 1 upon 6 and 1 upon 6 is in rational form like this a 1 upon 4. Is that clear? 9 जो है ना वो हमको यहाँ पर नीचे रखना है बेस पे. ठीक है, जो आपकी ये लाइन रहती है ना हॉरिजॉन्टल लाइन नोटबुक की, उस पे आपको 9 रखना है और ऊपर के साइड आपको 1 अपॉन 6 रखना है. इज दैट क्लियर? ये जो 6 है वो क्या है? सिक्स्थ रूट. हम इसको कैसे रीड करेंगे? सिक्स्थ रूट ऑफ 9. सिक्स्थ रूट ऑफ 9. 6 जो है वो इंडेक्स नंबर है, ऊपर के साइड है ना, इसलिए. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस थर्ड सब क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 256. स्क्वायर रूट ऑफ 256. तो स्क्वायर रूट कैसे लिखते हैं हम? स्क्वायर रूट हम ऐसे लिखते हैं ना, ए स्क्वायर. मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था ए स्क्वायर. स्क्वायर का होता है हमेशा ऊपर के साइड होता है, अपर साइड. ठीक है. बेस के ऊपर जो नंबर होते हैं उसको हम इंडेक्स नंबर कहते हैं. बेस के ऊपर जो नंबर होते हैं उसको हम इंडेक्स नंबर कहते हैं. तो यहाँ पर जो है क्या लिखा है? स्क्वायर रूट ऑफ 256. तो 256 क्या है? बेस है. तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 1 अपॉन 2 लिखना है हमें. ठीक है. तो हम लिखते हैं थर्ड सब क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज इक्वल टू 256 is the base and above that 256 we will put there 1 upon 2. So here above we will put here 1 upon 2. Is that clear? So this 256 is the base and 1 upon 2 is the 1 upon 2 where 1 is power and 2 is root. Is that clear? 2 is the root. So we can say that square root of 256. Is that clear, students? Now in this way we finish 3 sub question. Now sub question 4 is same like sub question 3. Okay. So let's solve sub question 4. Here again we have to put here, it is known that nth root of a is expressed as a 1 upon 4. Compulsory to write this. It is known that nth root of a is expressed as a 1 upon 4. Why nth root? Because they all are natural numbers. So nth root of a is what? A is this 17, 9, 30, 13, 256, 100. These all number are a. So a is expressed as a 1 upon 4. 1 upon 4 is what? 1 upon 4 is this number 6, cube, 7. Okay. So these all the number, these all the roots are 1 upon 4. So हमको इस एग्जाम्पल को कंसीडर करके हमको यहाँ पर सम सॉल्व करना है. Is that clear? Okay. Now sub question 4 here. Cube root of 17.
cube root of 17. Now here base is 17 and cube is the upper part. So 1 upon 3. 1 upon 3 हम लोग above लिखेंगे. ठीक है. 17 1 upon 3. So here we will put 17. Above side we will put here 1 upon 3. Is that clear? Now sub question 5. Sub question 5 says that 8th root of 100. So here we will put 8th root of 100 is equal to 100 and 1 upon 8. So here 8th root of 100 inside bracket 100 and above side we will put 1 upon 8. So here 1 upon 8 and here we will put 100. Is that clear? Now sub question 6. 7th root of 30. 7th root of 30 is equal to 30. जो है वो बेस है तो वो यहाँ पर रहेगा and above side we will put 1 upon 7. 1 upon 7 not 17. 1 upon 7. 8 लिखना है आपको. Is that clear? Why? Because they all are root. 7th is the root. So here we will put 30 and above side we will put 1 upon 7. 7th is the root of 30. Okay. So here 30 1 upon 7. So students, in this way we finish practice set 3.1 question number 1 all the 6 sub question. Is that clear? Now your task is to write all the 6 sub questions in your notebook. Now students, let's solve question number 2 of practice set 3.1. Here again question number 2 carries 6 sub question. Here on this sub question 2, question number 2, we have to write the question. We have to write in words form. Okay, we have to write all these sums in words form. So here the question is like this: write in the form of nth root of a in each of the following numbers. Now here numbers are given. We have to write all those numbers in words form. Okay. Now here first question is 81 1 upon 4. 81 1 upon 4. So here we have to write this in word. So what we will write here? 81 1 upon 4. So here we will write fourth root of 81. Here 81 is a and this 4 is the root. This 4 is the root. So here we can say that 40. Here we can say that fourth root of 81. So on this solution side we will write here in answer in word. So what we will write here? Fourth root of 81. See here, fourth root of 81. Nth root of a means here this is root. 4 is the root. So we will write there fourth root of 81. 81 is the base. So a is 81. So fourth root of 81. Next sub question. 49 1 upon 2. 49 1 upon 2. Now this 49 is a and 1 upon 2. So here this 2 is known as a square. So we will write square root of 49. 2 is called as square. 3 is called as cube. So here we will write square root of 49. So here we will write square root of 49 in words. Is that clear? Don't write 81 and 49 in words. Is that clear? Only we have to write this index in words. So here we will write fourth root of 81 square root of 49. Now sub question 3. 15 1 upon 5. So how we will write? We have to write this in words. So fifth root. This is 5. Na? So 5 is called as fifth. Fifth root of 15. Fifth root of 15. 15 is the base. Base is a. So a is how much? A is 15. A is 15. So fifth root of 15. Fifth root of 15. Here we will write fifth root of 15. Now sub question 4. 512 1 upon 9. 512 is base and 1 upon 9 is the index number. So ninth root. 9 is the root. Ninth root of 512. So here we will write is equal to ninth root of 512. 512 we will put there in number. Now next question. 100 1 upon 19. 100 1 upon 19. So 100 is the base and 19 is the 1 upon 19 is the index form. So 19th is the index. So we will call that 19th root of 100.
19th root of 100. So here we will write in words 19th root of 100. Spelling of 19th root of 100. Now next, 6 is the base and 1 upon 7 is the index. 6 is the base and 1 upon 7 is the index. So here we will write 7th root of 6. 7th root of 6. 7th root of 6. So here 81, 49, 15, 512, 100 and 6. All these numbers are the base. And 1 upon 4, 1 upon 2, 1 upon 5, 1 upon 9, 1 upon 19 and 1 upon 7. All these numbers are index number. So they all are index number. They are rational number. As you can see here 1 upon 4, 1 upon 2, 1 upon 5, 1 upon 9, 1 upon 19 and 1 upon 7. All these number are rational number which is not equal to 0. Is that clear? So these all number are rational number. And this denominator, we will consider only denominator because the value of 1 is nothing. One value is 1. But denominator value we have to consider. So 4th root of 81, square root of 49, 5th root of 15, 9th root of 512, 19th root of 100 and 7th root of 6. Is that clear? 7th root of 6. ये जो 81, 49, 15, 512, 100 और 6 है इसको आपको एज इट इज नंबर्स में ही लिखना है. बट यहाँ जो ऊपर इंडेक्स नंबर दिए हुए 1 upon 4, 1 upon 2, 1 upon 5, 1 upon 9, 1 upon 19, 1 upon 7 इसको आपको स्पेलिंग में लिखना है. वो भी 1 को नहीं, ओनली द डिनोमिनेटर वी विल कंसीडर. ठीक है. तो 4th रूट ऑफ 81, 4th की स्पेलिंग आपको लिखनी है. स्क्वायर रूट ऑफ 49 तो स्क्वायर रूट की स्पेलिंग आपको लिखनी है. 5th रूट ऑफ 15 तो 5th रूट की स्पेलिंग लिखनी है आपको. 9th रूट ऑफ 512 तो 9th रूट की स्पेलिंग लिखनी है. 19th रूट ऑफ 100 सो हियर 19th की स्पेलिंग आपको लिखनी है. 7th रूट ऑफ 6 तो 7th की स्पेलिंग आपको लिखनी है. इज दैट क्लियर? बाकी के जो नंबर से बेस जो नंबर है वो एज इट इज रहेंगे. Is that clear? Now students, in this way we finish practice set 3.1 both the question number 1 and question number 2. Question number 1 word में था, हमको फिगर में लिखना था. Now question number 2 फिगर में दिया हुआ हमको उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना था. इज दैट क्लियर? तो हमने इसको वर्ड्स में कन्वर्ट किए. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व न्यू प्रैक्टिस सेट दैट इज 3.2. बट बिफोर वी विल सी द बेसिक कंसेप्ट. Now students, let's solve practice set 3.2. Here practice set 3.2 there are two questions, question number 1 and question number 2. Question number 1 carries 5 sub questions. On that first one is solve question and remaining 4 we have to solve. Here sub question 1 has solution, but all these sub question 2, 3, 4 and 5, all these sub question we have to find here value. So here question number 1 says that complete the following table. We have to complete the incomplete tables given here. So how many boxes we have to complete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total 8 boxes we have to find here. Is that clear? And total how many sums we have to find? 4 sums. So let's solve. First here sub question 1. Sub question 1 is solved. So on the base of sub question 1 we will solve the remaining sums. So first understand the sub question 1. Sub question 1 says that 225 3 upon 2. Now this 3 upon 2 is written as rational number form. Is written in rational number form. 3 is the numerator and 2 is the denominator, where rational number, where denominator is not equal to 0. You can see here denominator is not equal to 0. Denominator the number is 2. Okay, so 3 upon 2. 3 is the power and 2 is the root. Here 225 is the base. As I taught you in practice set 3.1, what I told you that जो नंबर नीचे है वो बेस है और जो नंबर ऊपर की तरफ है वो इंडेक्स नंबर है. तो यहाँ पर 225 बेस है और 3 upon 2 जो है वो इंडेक्स नंबर है. अभी इंडेक्स नंबर में भी हमको पता रहना चाहिए कि कौन सा पावर है और कौन सा रूट नंबर है. तो जो न्यूमरेटर है वो पावर है और जो डिनोमिनेटर है वो रूट है. इज दैट क्लियर? So we will write, we have to write this form: power of the root and root of the power. Power of the root and root of the power. Numerator is the power. Numerator number is the power and denominator is the root. So here we can say that cube of
cube of square root of 225. First we have to write here power. So what is the value for power? 3. So हम 3 को 3 नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं उसको हम? 3 को क्यूब पढ़ते, 3 को हम 3 रीड नहीं कर सकते. What we have to read? 3 cube. So here we will write cube of square root of 225. Is that clear? Now root में हम क्या लिखेंगे? Denominator. पावर में न्यूमरेटर को फर्स्ट लिखना है और रूट में डिनोमिनेटर को फर्स्ट लिखना है. तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225. स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225. इज दैट क्लियर? पावर क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है? रूट है. इज दैट क्लियर? अभी 45 बेस है, 81 बेस है, 100 बेस है, 21 भी क्या है? बेस है. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? सबसे पहले आपको पावर बताना है. तो पावर क्या है? न्यूमरेटर. सो हियर 4 इज द पावर एंड 5 इज द रूट, 6 इज द पावर, 7 इज द रूट, 4 is the power and 10 is the root, 3 is the power and 7 is the root. कब? जब आप power of the root लिखोगे तब. ठीक है? और जब आप रूट लिखोगे तो सबसे पहले आपको रूट को फर्स्ट लिखना है. इज दैट क्लियर? तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? फोर्थ ऑफ, नॉट क्यूब ऑफ, यहाँ पर 4 है ना, तो फोर्थ ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45. See here we have to find all these four sums. So here first we will write 4 power of, 4 is the power, 4 power of fifth root of 45, 4 power of fifth root of 45. Is that clear? Now यहाँ पर क्या लिखोगे आप? fifth root of 445, 4 power of 45, fifth root of 4 power of 45. स्क्वायर और क्यूब रहेगा ना तो आपको वैसे ही लिखना है, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225. लेकिन अगर स्क्वायर और क्यूब के आगे के नंबर है ग्रेटर देन 2 और 3 है तो आप क्या लिखोगे? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ऐसा आपको लिखना है. ठीक है? अभी 81 क्या है? बेस है, 6/7 इंडेक्स है. लेकिन यहाँ पर जब आप पावर लिखोगे तो सबसे पहले आपको 6 को कंसीडर करना है. किसको कंसीडर करना है? 6 को. 6/7 है ना, तो 6 को आप पहले कंसीडर करोगे. तो आप क्या लिखोगे? सिक्स्थ पावर ऑफ, sixth power of seventh root of, sixth power of seventh root of 81. यहाँ पर आप लिखोगे sixth power of seventh root of 81. Similarly आप यहाँ पर क्या लिखोगे? seventh power नहीं, अभी पावर नहीं, अभी सबसे पहले रूट आएगा. तो seventh root of sixth power of 81. रूट में पहले रूट को लिखना है आपको. seventh root of 6 पावर ऑफ 81. देखो यहाँ पर पावर दिया है ना, तो फर्स्ट आप पावर को दोगे. ठीक है? और यहाँ पर रूट दिया है तो आप पहले रूट के बारे में लिखोगे. 100 4/10. तो अभी 100 जो है वो बेस है, 4/10. 10 क्या है? 10 जो है वो डिनोमिनेटर है. तो 10 को मैंने बोली ना रूट है और 4 क्या है? पावर है. तो आप कैसे लिखोगे? फोर्थ पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 100, फोर्थ पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 100 जब आप पावर में लिखोगे. ठीक है? लेकिन आप जब आप रूट में लिखने वाले हो तो सबसे पहले आप 10 से स्टार्ट करोगे. अब 10 क्या है? रूट है. तो 10th रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 100, 10th रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 100. इज दैट क्लियर? नाउ लास्ट वन, 21 3/7. नाउ 3 को 3 नहीं रीड करना है, 3 को हम क्या रीड करेंगे? क्यूब पढ़ेंगे. ठीक है? और क्यूब में अलग कभी नहीं लिखते आप, क्यूब पावर ऐसा नहीं लिखते ना. स्क्वायर को कभी लिखते स्क्वायर पावर? नो. ठीक है? तो आप क्या लिखोगे उसको? क्यूब ऑफ. क्या लिखेंगे आप उसको? क्यूब ऑफ. क्यूब ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ, क्यूब ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 21, क्यूब ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 21. लेकिन अभी रूट में लिखना है तो आप क्या लिखोगे? सेवेंथ रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21. क्यूब पावर मत लिखना. ठीक है? सेवेंथ रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21. याद रखना, क्यूब और स्क्वायर को पावर में मत लिखना. वो है पावर लेकिन उसके अंदर हम लिखेंगे नहीं, अलग से स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि क्यूब है कि स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि पावर है. ठीक है? किसको? क्यूब को, 3 को और 2 को. उसको हमको क्या रीड करना है? क्यूब. 3 को हमको क्या रीड करना है? क्यूब. 3 को हम क्या रीड करेंगे? क्यूब रीड करेंगे. ठीक है? और 2 को हमको क्या रीड करना है? स्क्वायर रीड करना है. तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो रूट के नंबर है. तो सेवेंथ रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21. इज दैट क्लियर?
So students, in this way we finish question number 1 of practice set 3.2. Question number 1 of practice set 3.2. Now let's solve question number 2 of practice set 3.2. Now students, let's solve question number 2 of practice set 3.2. Here, question number 2 says that write the following number in the form of rational indices. Write the following number in the form of rational indices. So here, rational indices means P upon Q where Q is not equal to 0. So denominator cannot be equal to 0 means it is rational. So here we have to present these sums in a rational indices form. So our first sub question says that square root of fifth power of 121. So here we have to write this in a rational indices form. So we will write here solution square root of fifth power of 121. Now students, here 121 is the base. So here we will draw one curly bracket, one C bracket, and inside this C bracket I will put there 121, close the bracket, close C bracket and close the curly bracket. And here I will put 5 and outside the bracket I will put square. Okay, so fifth power of 121. So here I will put power, fifth power. So 121 fifth power and square root. So outside the bracket I will put here square. Outside the bracket I will put here square. Is that clear? Now next sub question. Cube of fourth root of 324. Cube of fourth root of 324. Now students, here solution cube of fourth root of 321. Here 324 is the base and here cube and fourth root is given. Cube of fourth, okay, root of 324. That means here we have to draw curly bracket, inside the curly bracket C bracket, 324, close the C bracket और उसके बाद आपके पास 4 है और क्यूब है, तो आप क्या करोगे, क्यूब को और 4 को आप इनसाइड लिखोगे और बाहर की तरफ जैसे यहाँ पर 2 है वहां पर आपको क्या लिखना है, क्यूब लिखना है. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आपने क्या लिखे, फोर्थ, और यहाँ पर आपने क्या लिखे, 3 लिखे. इज दैट क्लियर? So here fourth and outside the bracket cube. So here 324 4 and here cube. जो पहले बोलेगा आपको उसको ही फर्स्ट रखना है. यहाँ पर स्क्वायर रूट बोला था तो आपने बाहर स्क्वायर रूट डाले, यहाँ पर क्यूब बोला था तो आपने बाहर क्यूब डाले. इज दैट क्लियर? जैसा क्वेश्चन आपसे डिमांड करेगा आपको आंसर भी अकॉर्डिंग टू वैसे ही देना है. यहाँ पर स्क्वायर रूट बोला था तो हमने क्या किया, आउटसाइड द ब्रैकेट स्क्वायर रखे और इनसाइड द ब्रैकेट 5 रखे. सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको ऐसे ही करना है. पहले क्यूब बोला है, क्यूब ऑफ फोर्थ बोला है, तो लास्ट में यहाँ पर आप क्यूब लिखोगे और इनसाइड ब्रैकेट आप 4 लिखोगे. अब आप मुझे सजेस्ट करो मुझे यहाँ पर क्या करना है. क्वेश्चन नंबर 3 हियर सब क्वेश्चन 3, फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 324. फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 324. अब आप मुझे बताओ कि आउटसाइड ब्रैकेट कौन सा नंबर जाएगा और इनसाइड ब्रैकेट कौन सा नंबर रहेगा. आई एम गिविंग यू few second time, just think and give me answer. Fifth root of square of 264. ये 264 is the base. ठीक है, तो सबसे पहले आपने कर्ली ब्रैकेट ड्रॉ किए, उसके बाद आपने सी ब्रैकेट के अंदर आपने क्या लिखा, 264. अब क्या लिखोगे, और आउटसाइड ब्रैकेट आप वो नंबर लिखोगे जो यहाँ पर सबसे पहले डिमांड किया है. तो फिफ्थ रूट बोला है तो आप इसको लास्ट में लिखोगे. ठीक है, जैसे यहाँ पर ये लास्ट में है ना, वैसे तो फिफ्थ का जाएगा आउटसाइड द ब्रैकेट और इनसाइड द ब्रैकेट आप क्या लिखोगे, स्क्वायर. सो हियर 264 इनसाइड ब्रैकेट स्क्वायर लिखे और फिफ्थ था ना, देखो ना फिफ्थ रूट था तो हमने क्या लिखे, 1/5 कर दिए, 1/5. अगर स्क्वायर रहेगा तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्यूब रहेगा तो डायरेक्टली, लेकिन अगर फोर्थ रहेगा फिफ्थ रहेगा तो उसके लिए आपको रैशनल नंबर का यूज करना होगा, 1/5 का. इज दैट क्लियर? 1/5, 1/6 एज पर द क्वेश्चन सेज दैट. ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या लिया, 1/5. 1/5 इज द रैशनल इंडाइसेस. इज दैट क्लियर? नाउ हियर आल्सो 1/3 और 1/2 है, बट यहाँ पर 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली वी विल राइट 2. 2 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर रूट बोला था, दैट्स व्हाई वी हैव पुट आउटसाइड द ब्रैकेट स्क्वायर. यहाँ पर क्यूब दिया था तो आउटसाइड ब्रैकेट आपने क्यूब लिखे.
ठीक है, और ये 4 तो इनसाइड ब्रैकेट रहेगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3। तो 3 जो है यहाँ पर बेस है, क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3, देखो बाहर भी 3, अंदर भी 3, बेस पे भी 3, तो आप कैसा लिखोगे, क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3, बेस पे 3 है, ऊपर भी 3, नीचे भी 3, ठीक है, सो 3 3 कट, सो हियर 3 1/3, क्यों, क्योंकि ये क्या लिया आपने, रैशनल इंडाइसेस, यहाँ पर क्या लिखा आपने 3, अब देखो 3 1 जा 3 एंड 3, सो 3 3/3 आंसर आएगा इज इक्वल टू 3 3/3, ठीक है। आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो, जरूरत नहीं है ये स्टेप लिखने की आपके समझने के लिए, ठीक है। आउटसाइड ब्रैकेट 3 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले क्यूब डिमांड किया था, क्यूब ऑफ क्यूब, तो आउटसाइड ब्रैकेट आपको क्यूब लिखना है, क्यूब रूट ऑफ 3, सो 1/3, और यहाँ पर 3 लिखना है, 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेस जो है वो 3 है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आप सबको ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। So now students, your task is to write all these sums in your notebook.